बच्चों हमारी सीरीज जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि 100 MCQs की हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इसकी टेस्ट सीरीज संघर्ष के नाम से। ओके, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। इसमें जो देखो ये क्वेश्चन जो है हमने चैनल पे करे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर लेके आती हूँ मैं। 100 क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं, एक तरीके से टेस्ट पेपर आप लगा सकते हैं, अपना आपको एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है बच्चों, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रह जाएगी। ओके, जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का है, सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, और बाकी आपको पता ही है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो अभी देख लेते हैं इस सीरीज के क्वेश्चन कैसे क्या हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करें हमारा वीडियो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा हुआ है। सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, हाई एलुरोनिक एसिड होता है। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में हमारा आ जाएगा क्या, हाई एलुरोनिक एसिड आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रिकर्सर नहीं है ना। लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलिनिन, एसिटिक एसिड नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड इज नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायमिन। थायमिन किसे कहोगे, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन A है ना। थायमिन आंसर इज ऑप्शन 1, vitamin B1 is thiamine. Next, which of the following option is correct regarding the functions of vitamin K? It is required for the synthesis of various proteins needed for the process of blood clotting. It helps in forming different type of cells for different tissues and turnover. It plays an active role in calcium metabolism. It is a natural antioxidant है ना। तो functions of vitamin K के बारे में correct बताना है। Answer is option 1. It is required for the synthesis of various proteins needed for the process of blood clotting. Next question. An amino acid considered as a lipotrophic factor is methionine, tryptophan, histidine, serine. Answer of this question is option A. Methionine amino acid जो होता है it is considered as a lipotrophic factor. Next question, sulfur containing amino acid is ornithine, asparagine, aline, glutamine. Answer is option C. Aline is sulfur containing amino acid. Next, a purine base found in RNA is cytosine, thymine, guanine, uracil. Purine base found in RNA is purine base, option C, guanine. Next question, two strands of DNA are held together by bonds of nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon. Two strands of DNA are held together by bond of hydrogen, option C. Next है phospholipid consist of fatty acid plus alcohol plus phosphate group plus nitrogen base, fatty acid plus alcohol, fatty acid plus alcohol plus carbohydrate plus nitrogen base, lipid plus protein. Phospholipid consist of. Answer is option A. Fatty acid plus alcohol plus phosphate group plus nitrogen base. Next, lecithin is example of glycerophospholipid, glycolipid, lipoprotein, sphingophospholipid. Answer is option A. Glycerophospholipid. Lecithin is example of glycerophospholipid. Next question, which of the following is an optimum temperature for most of the enzymes to activate? Options are 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, 50 degrees Celsius to 60 degrees Celsius, 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Answer of this question is option C, 35 degrees Celsius to 40 degree सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना। नेक्स्ट है Km वैल्यू इंडिकेट इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल,
purity of enzyme, affinity. Km value indicates option D, affinity. Next, which among the following is not a parenteral route of administration? Intrathecal, subcutaneous, intravenous, rectal, suppository. Which of the following is not a parenteral route of administration? Answer is option D, rectal. Suppository is not a parenteral route of administration. Next, which route of drug administration is most likely to lead to first pass effect? Sublingual, oral, intravenous, intramuscular. Answer is option B, oral. Next question. Drug known to be an antagonist of adrenergic receptor and is used in the treatment of hypertension and angina is isoprenaline, propranolol, adrenaline, ephedrine. Answer is option B, propranolol. Next question. Synthetic catecholamine is isoproterenol and methyl noradrenaline, dopamine. Answer is option A, isoproterenol. Next question. Histamine has a dash heterocyclic nucleus. Imidazole, pyrrolidine, pyridine, pyrimidine. Histamine has a dash heterocyclic nucleus. Answer is option A, imidazole nucleus होता है. Next है histamine concentration is highest in mast cell, sympholites, adipolytid, beta cell. Answer is option A, mast cell. Histamine concentration is highest in mast cell. Next, which are inhaled corticosteroids? Hydrocortisone, budesonide, prednisolone, dexamethasone. Answer is option B, budesonide is inhaled corticosteroid. Next question. Asthma is characterized by recurrent episodes of wheezing, chest tightness, coughing, all. है ना? Answer is option D, all of the above. Next question. Binding of insulin to the insulin receptor triggers interaction of receptor with protein G, activation of adenyl cyclase, activation of phospholipase C, tyrosine kinase activity. Answer is option D, tyrosine kinase activity. Binding of insulin to the insulin receptor triggers tyrosine kinase activity. Next, which of the following is correct? Side effect of metformin is vitamin B12 deficiency. Side effect of insulin is hypoglycemia, lipodystrophy. Side effect of fenformin is lactic acidosis. Yeah, all. Which is correct? Answer is option D. All three statements are correct. तीनों बातें सही हैं. Option D, all हो जाएगा. Next question. Adverse effect of ACE angiotensin converting enzyme inhibitors are hypotension, hyperkalemia, dry cough, all. Adverse effect of ACE inhibitors are answer D, all. Hypotension भी कराते हैं, hyperkalemia and dry cough. Next question. Most significant adverse effect of ACE inhibition angiotensin converting enzyme inhibition का most significant adverse effect hypotension, hypertension, hypocalcemia, hypercalcemia. Answer is option A, hypotension. Next question. Patient who have received MAO inhibitors may experience severe hypertensive crisis if they ingest cheese, beer, fish, all. Patients who have received MAO inhibitors may experience severe hypertensive crisis if they ingest option D, all. Fish, beer and cheese. है ना? तीनों ही इंजेस्ट करने से जो माओ इनहिबिटर्स वाले पेशेंट्स हैं उनमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है. नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. लिडोकेन, प्रोकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन. शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोकेन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज anticoagulants and is commonly used to prevent the formation of blood clots
and treat conditions such as deep vein thrombosis. Options are codeine, aspirin, warfarin sodium, testosterone. Answer is option 3, warfarin sodium. Next question. Which of the following drugs possess antiplatelet effect? Erythropoietin, urokinase, desmopressin, clopidogrel. Answer is option डी क्लोपिडोग्रिल. एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है कौन सी ड्रग का? क्लोपिडोग्रिल. नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनिबिटर्स लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम: पायरिडीन, बेंजिमिडाजोल, बेंजोथायाजोल, ऑक्सइंडोल. आंसर इज ऑप्शन बी, बेंजिमिडाजोल. रिंग प्रेजेंट होता है ओमिप्राजोल और लैंसोप्राजोल इन पीपीआईज में. नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद H1 एंटागनिस्ट, D2 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, 5S3 एंटागनिस्ट. पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद H2 एंटागनिस्ट. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड्स? ऑप्शंस है दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, they are active primarily against aerobic gram-negative bacilli, they do not cross placenta, they are inhibitors of protein synthesis. तो आपको इस टाइप से ऑप्शंस दिए हैं कि फॉल्स बताना है कि भाई फर्स्ट वाला फॉल्स है, फर्स्ट और थर्ड फॉल्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉल्स हैं, या सेकंड और फोर्थ फॉल्स हैं. तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी मतलब कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला फॉल्स है. मतलब कि फर्स्ट वाला जो है बैक्टीरियोस्टैटिक वाला और थर्ड वाला डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, दोनों गलत हैं, बाकी ठीक लिखे हुए हैं. ओके. नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज, हैंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई इज फ्रामाइसिटीन, सिसोमिसिन, एमिकैसिन, टोब्रामाइसिन. आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रामाइसिटीन जो है हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड है जो टॉपिकल यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन. आंसर इज ऑप्शन ए, फ्लैश डिस्टिलेशन होता है इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड impure product, compressed product, contaminated product, sterile product. Answer of this question is option D. A preparation which is free from viable microorganism is called sterile product. Next question, in medical prescription TID stands for at noon time, at bedtime, at morning, 3 times a day. Answer of this question is option D, 3 times a day, TID. Next question, during the preparations of parenteral products, all the containers and closures are thoroughly cleaned with ether, detergent, alcohol, acetone. Answer of this question is detergent, option B. Next question, रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, है ना, 0.3% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, 0.2% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, 0.1% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर. रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ ऑप्शन डी, 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर. नेक्स्ट है a prescription is a written order form of a pharmacist, registered medical practitioner, chief pharmacist, clinical pharmacist. Answer is option B, registered medical practitioner, RMP, है ना, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैन्यूल डेंसिटी, चिल्सोमीटर, बैरोमीटर, डायोजना मिक्सर, पिक्नोमीटर. आंसर इज ऑप्शन डी, पिक्नोमीटर. ग्रैन्यूल की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए पिक्नोमीटर यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू द कोएगुलेशन, रिडक्शन,
hallucination, oxidation. Answer of this question is option A. In moist heat sterilization bacteria are killed due to coagulations, है ना. नेक्स्ट है सैकरीन इज डैश टाइम स्वीटर दैन सुक्रोज. 1050, 500 या मतलब कि 500 या 150. सैकरीन इज ऑप्शन सी 500 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज. नेक्स्ट है एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स डैश द एंगल ऑफ रिपोज. डू नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज दैन डिक्रीज. आंसर इज ऑप्शन बी. एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज. नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग. सिनामोन, सिनकोना, सना, नक्सवोमिका. प्लाज्मोडेस्मा कौन सी ड्रग का जो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नक्सवोमिका, ऑप्शन डी. नक्सवोमिका में प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सवोमिका सीड्स बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी, पापावरेसी, लोगैनिएसी, एपोसाइनेसी. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लोगैनिएसी. नक्सवोमिका सीड्स बिलोंग्स टू द फैमिली लोगैनिएसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, balsams contain mainly acids like citric acid and benzoic acid, tartaric acid and benzoic acid, acetic acid and benzoic acid या cinnamic acid and benzoic acid. आंसर इज ऑप्शन डी. जो बाल्सम कंटेन्स मेनली एसिड्स लाइक सिनेमिक एसिड होता है प्लस बेंजोइक एसिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन बाल्सम ऑफ टोलू में, कोलोफोनी में, स्टोरेक्स, एसाफोइटिडा. फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए बाल्सम ऑफ टोलू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच बिलोंग्स टू पॉलीगोनेसी फैमिली. पॉलीगोनेसी फैमिली से बिलोंग करती है कौन सी ड्रग? अर्जुना, कैस्ट्रोइल, रुबार्ब, नटमग. ड्रग विच बिलोंग टू पॉलीगोनेसी फैमिली. आंसर इज ऑप्शन सी रुबार्ब बिलोंग टू पॉलीगोनेसी फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवैंचीनी इज द कॉमन नेम फॉर रुबार्ब, अलोक, कैस्केरा, सिनेमोन. रिवैंचीनी इज द कॉमन नेम फॉर. आंसर इज ऑप्शन ए रुबार्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन, a fruit which is used as a diuretic. Fennel, amla, ajwain, gokhru. Fruit which is used as diuretic is option D. Gokhru is used as diuretic. Next है absorbent cotton consists of epidermal trichomes from the seeds of cultivated species of Terminalia tomentosa, Acacia, Simia, Dalbergia, Latifolia, Gossypium. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी गोसिपियम, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग क्लोव. क्लोव में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट है? पैरासिटिक, डायासिटिक, एनोमोसिटिक, एनाइसोसिटिक, है ना. आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा. क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन गम. इंडियन गम का सोर्स बता दीजिए. अकेशिया अरेबिका, जेलिडियम अमनसी, एस्ट्रागेलस गमीफर, स्टर्क्यूलिया यूरेंस. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अकेशिया अरेबिका इज अ सोर्स ऑफ इंडियन गम. गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेग्यूमिनोसी फैमिली. वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म is needed for the cosmetic manufacture. Form number 36, form 32, form 20, form 24. Answer is option B, form 32. Next question, total number of state pharmacy council members are 10, 15, 20, 25, है ना. ऑप्शन बी हो जाएगा 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन ₹500, 6 month imprisonment, ₹1000, both fine and imprisonment. Answer of this question is option A. फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन कितना है? ₹500, 500 रुपये का फाइन है. नीचे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज पास्ड इन द ईयर. MTP एक्ट की बात हो रही है. 1971, 1871, 1981, 1891. Answer of this question is option A, 1971.
Next question, appointment of drug inspector is as per the section of Drug and Cosmetic Act 1940, 1942, 2130. Answer is option C 21. Appointment of drug inspector is as per the section of Drug and Cosmetic Act के कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 21. नेक्स्ट है इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट अपसाला स्वीडन, जनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, मैक्सिको सिटी मैक्सिको. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अपसाला स्वीडन. नेक्स्ट क्वेश्चन, DTAB हैज डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 5, 6, 4 या 8. आंसर इज ऑप्शन डी, DTAB में 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. Next question, aspirin sodium comes under Schedule G, Schedule H, Schedule J, Schedule W. Answer of this question is option D, Schedule W में आता है aspirin. Next example of Schedule G drug, metformin, enalapril, ciprofloxacin, barbital. Answer is option A, metformin Schedule G drug है. Next question, process of transfer of food from mouth to the stomach is called as parturition, deglutition, mastication, micturition. Answer is option B, deglutition. Process of transfer of food from mouth to the stomach is known as deglutition. Next question, renin is a hormone secreted by liver, pancreas, kidney, ovary. Answer of this question is option C, renin is a hormone secreted by kidney. Next question, which gland possess both endocrine and exocrine functions? Thyroid, pancreas, parathyroid, adrenal. Both exocrine and endocrine functions perform करती है. Answer is option 2, pancreas. Next question, human brain is covered by how many membrane? है ना, meninges 3, 7, 8 या 9. Answer is option A, 3 meninges होती है, membrane होती है, option A. Next, ribosome is the site for production of nucleic acid, vitamins, chromosomes, proteins. Answer of this question is option D, ribosome is the site for production of proteins. Next, tissue system composed of neurons and neuroglia is, है ना, muscular tissue, epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue. Answer is option D, nervous tissue. Next question, lymphatic capillaries resemble blood capillaries because lymphatic capillaries have the same permeability as blood capillaries, lead to the vena cava, have a lining of endothelium, are thick walled tubes. Answer is option C, have a lining of endothelium. Next question, fluid part of blood devoid of corpuscles is called serum, plasma, lymph, tissue fluid. Answer of this question is option B, fluid part of blood devoid of corpuscles is called plasma. Next question, breathing in and out is collectively referred as expiration, perspiration, inspiration, respiration. Answer of this question is option D, respiration. Breathing in and out is collectively referred as respiration. Next question, which of the following is a superficial vein of the cardiovascular system? Basilic vein, axillary vein, subclavian vein, palmar vein. Answer is option A, basilic vein is the superficial vein of the cardiovascular system. Next question, dash medications are stocked on nursing stations at all time, but they are not directly charged to an account of patients. The cost of such medicines is adjusted in the room rent. तो कौन सी medications हैं? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, चार्ज फ्लोर स्टॉक, सैटेलाइट फार्मेसी या नन? आंसर इज ऑप्शन ए, ये होती है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक मेडिकेशंस. कौन सी होती है? नॉन चार्ज floor stock medications are stocked on nursing stations at all time, but they are not directly charged to an account of patients. Cost of such medicines is adjusted in the room rent. Okay. Next question, non-charged drugs are saline solution, dextrose solution, both or none?
Answer is option C, both. Non-charged drugs are saline solutions, dextrose solution, both. Next question, unit dose dispensing system is used for inpatients, outpatients, both inpatients and outpatients, emergency patients. Answer is option A. Unit dose dispensing system is used for inpatients. Next question, dispensing of medicines would be difficult in the absence of pharmacist in the following system. Unit dose dispensing system, individual prescription order system, floor stock system, combination system. Answer of this question is option B, individual prescription order system. Dispensing of medicines would be difficult in the absence of pharmacist in individual prescription order system. Next question, a patient that is admitted in the ward is known as inpatient, outpatient, ambulatory patients, none. Patients that is admitted in the ward is known as inpatients, option A. Next question, which of the following antioxidant reduce halogens melt at 50 degrees Celsius while decompose on being heated at 100 degrees Celsius? Nitrogen, sodium thiosulfate, sodium metabisulfite या hypophosphorus acid. Answer is option 2, sodium thiosulfate. Okay. Next है identify one of the strong acid H2CO3, HCN, CH3, COOH या H2SO4. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट, विच थियरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन कंसेप्ट? मैक्सवेल थ्योरी, लेविस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, लोवरी ब्रोनस्टेड थ्योरी. आंसर इज ऑप्शन 4, लोवरी ब्रोनस्टेड थ्योरी को प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहा गया है. नेक्स्ट, विच इज a general type of absorbent used in poisoning that not only absorb heavy metals but also absorb gases like carbon monoxide, carbon dioxide. Activated charcoal, copper sulfate, sodium phosphate, magnesium sulfate. Answer of this question is option A, activated charcoal हो जाएगा, है ना. Next question, aqueous iodine solution is also known as strong iodine solution, Lugol's iodine solution, Lugol solution, povidone iodine solution, or weak iodine solution. Aqueous iodine solution is also known as Lugol solution. Option B. Next question. All of the following are compounds capable of functioning as antimicrobial agents through oxidative mechanism except chlorinated lime, hydrogen peroxide, iodine या potassium permanganate. Answer of this question is option A, chlorinated lime. कह रहे all of the following are compound capable of functioning as antimicrobial agent through oxidative mechanism except chlorinated lime. ठीक है. नेक्स्ट है suitable indicator for the titration of strong acid and weak alkali. Phenolphthalein, universal indicator, crystal violet, methyl orange. Answer is option D, methyl orange is a suitable indicator for the titration of strong acids and a weak alkali. Next question, dash is a method used in the laboratory to determine the concentration of an unknown solution. Titration, dissolution, angle of repose, disintegration. Answer is option A, titration. Titration is a method used in laboratory to determine the concentration of unknown solution. Next है primary standard for standardization of perchloric acid. Sodium chloride, potassium hydrogen thalate, potassium dichromate या sodium oxalate. Answer is option B, potassium hydrogen thalate. क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो आइसोमर, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, लिवो आइसोमर. आंसर इज ऑप्शन बी, सिस आइसोमर. इफ द आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट इज टर्म्ड एज सिस आइसोमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप help to remove the hindrance of knowledge, hindrance of place, hindrance of risk, hindrance of spoilage. Answer is option A, advertising and salesmanship help to remove the hindrance of knowledge. Next question, warehousing remove the hindrance of time, knowledge, place, person. Warehousing removes
the hindrance of time, option 1. Next, in commerce, hindrance of exchange is removed by trade, bank, insurance, currency. Answer is option B, bank. In commerce, hindrance of exchange is removed by option B, bank. Next है, which test is performed to test the susceptibility to diphtheria? Schick test, Mantoux test, Lapromine test, Dick test. Answer is option A. Schick test is performed to test the susceptibility to diphtheria. Next है, shape of Vibrio cholera is bullet shape, comma shape, round shape, bottle shape. Shape of Vibrio cholera is option B, comma shape. Next question, shape of bacilli is sphere, comma oval rod. Shape of bacilli is option D, rod shape. Next है, comma shape bacteria is bacilli, cocci, vibrio, spirochetes. Comma shape bacteria is option C, vibrio. Next question, streptococci are arranged in cluster, chain, circle, hair, circle. Streptococci are arranged in option B, chain. Next question, rod shaped cells are cocci, vibrio, bacilli, spirilla. आंसर इज ऑप्शन सी, बैसिलाई rod शेप होते हैं. नेक्स्ट है, हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन इन 1955? जोनस साल्क, थियोडोर रूजवेल्ट, जोसेफ स्टेलिन, हिराम मैक्सिम. आंसर इज ऑप्शन ए, जोनस साल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, substance that is present only in gram positive bacteria cell wall is lipopolysaccharide, teichoic acid, peptidoglycan, cellulose. Substance that is present only in gram positive bacteria cell wall is answer B हो जाएगा, teichoic acid. Next question, which of the following is a gram negative bacteria? Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococci, Escherichia coli. आंसर इज ऑप्शन डी, ई कोलाई, जो एस्चेरिकिया कोलाई होता है. इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज ग्राम नेगेटिव? ई कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, पी नोटेटम. आंसर इज ऑप्शन ए, ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना. तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चन.